Okay, so we've got 2 points that are A and B, and they have their coordinates given, -2 and 1, and 6 and -5. We first have to calculate the gradient of the line AB. A और B A को जो line join करती है उसका gradient figure out करना है, ठीक है? Now, while we are working on these questions, I would recommend आप साथ साथ जो है वो participate भी कर रहे हो. So you should keep writing in the chat box कि अच्छा इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए. Do not just listen to me passively. Try to be active in responding to the questions. कि अच्छा इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए. That will help you think. ठीक है? आपका thinking process उसमें develop होगा. अगर सिर्फ मुझे सुन रहे हो तो ठीक है, आपको समझ आ जाएगी. लेकिन आपने खुद से जब करना होगा फिर आप दोबारा से सोच रहे होगे अच्छा क्या करना है. वो thinking आपने साथ साथ करनी है मेरे साथ. ठीक है? And make sure you have a notebook in front of you as well that you are writing on. Okay, so the points A and B are -2 and 1 and 6 and -5. So this is point A and this is point B. Gradient of the line AB आपको figure out करना. Now remember gradient का formula क्या होता था? It's y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ठीक है? तो आप किसी भी point को आप उसके coordinates को कह दो. This is x1, this is y1, and the other is x2 and y2. Okay? Now, इसमें मैटर नहीं करता आप किसको x1 y1 को किसको x2 y2 को, that does not matter, right? So gradient क्या आएगा? आप ये values इसके अंदर input करोगे. So that's -5, that was y2, y1 is 1, x2 is 6. अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साइन का. So x2 minus x1, x1 is -2, right? तो उसको आपने ब्रैकेट में इस तरह input करना है, 6 minus -2. Right, so what does that give you? That gives you -6 in the numerator divided by 8 in the denominator, because that's 6 plus 2, which is after cancellation, that is -3 over 4. -3 over 4. Hassan, that's -3 over 4, not 3 over 5. नीचे 8 है हमारे पास, right? When you do cancellation there, it becomes -3 over 4. Okay, that's -3 over 4. 6 over 8 था ना, उसमें cancellation की यहाँ पे, so that's 3 over 4. Now, but now since you have paper 2 only, आप जुलाई में दे रहे हो एग्जाम, आपने सिर्फ paper 2 करना है. I would recommend use calculator wherever you have to, right? आप ठीक है, if your mental math is good, आप खुद से लिख लो, but make sure you confirm that from your calculator. ठीक है, because आप paper 1 तो है नहीं, अब आप paper 2 है सर, तो आप कैलकुलेटर से जरूर कंफर्म करो ताकि इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होगी ना आपसे. Okay, so this is -3 over 4. That is the gradient of the sine. Okay, अच्छा उसके बाद वो क्या कहता है? Find the equation of the line passing through A and B. A और B से जो लाइन पास करी है उसकी इक्वेशन चाहिए. अच्छा, now remember आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती थी? y equals mx plus c. क्या चीजें चाहिए होती हैं आपको? ग्रेडियंट चाहिए होता है एक तो, और एक और पॉइंट चाहिए होता है जो लाइन के ऊपर लाई करता है. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज, ग्रेडियंट तो आपके पास है ऑलरेडी. सो ग्रेडियंट क्योंकि -3 over 4 है, यू से दिस इज -3 over 4 times x plus c. ग्रेडियंट तो हमारे पास था, m की जगह ग्रेडियंट की जगह हमने वो पुट कर दिया, that's -3 over 4. अब c कैसे फाइंड करें? एनी आइडिया हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c? c कैसे फिगर आउट करेंगे? क्योंकि लाइन ए और बी से पास करती है तो दोनों पॉइंट इस लाइन को सैटिस्फाई करते हैं. उनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे इनपुट कर दो इसके अंदर, आप बेशक ए पुट कर दो या बी पुट कर दो, इट डजंट मैटर व्हिच वन यू पुट, उसको यूज करके आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो. सो फॉर इंस्टेंस आई से लेट्स इनपुट 6 और लेट्स से -2 and 1 in this. X की जगह -2 और y की जगह 1. What do we get from that? We get 1 equals -3 over 4 multiplied by -2 plus c. यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. What does that turn out to be? Let's figure that out. So that's 1 equals 3 into 2, that's 6. 6 over 4 plus c. C is equal to 1 minus, so cancellation कर लेगा यहाँ पे, it's 3 over 2, 1 minus 3 over 2.
या बेशक कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसको evaluate करें, it will turn out to be -1/2. ठीक है, -1/2 कह लें, -0.5 कह लें, it's the same thing. तो आपकी equation of line क्या आ गई फिर? The equation of line therefore is y equals -3/4x plus c. C की value क्या थी? C की value is -1/2. That is your equation of the line that passes through A and B. Is this clear? Is this clear to everyone? So आपने focused रहना है. Make sure if I'm doing any careless error somewhere, कोई calculation error, you have to let me know and keep your calculators with you. I'll be asking you to do calculations for me. So is this clear? Okay, good. So that's the equation of AB. -3/4x -1/2. Now let me erase this. That's y equals -3/4x -1/2. That was the equation. Okay. Now the next thing is the points C and D are 4, 5 and PQ. Okay. अब उसने दो points थी, एक 4, 5 एक PQ है. Write down in terms of P and Q the coordinates of the midpoint of CD. अब remember midpoint formula क्या होता था? Midpoint of CD, midpoint find करना है. Okay. Midpoint formula क्या होता था? It was x1 plus x2 divided by 2. दोनों x coordinates को add करना है, 2 से divide कर देना है. y1 plus y2 divided by 2. दोनों y coordinates को add करना है, उनको divide by 2 कर देना. ठीक है? This was the midpoint formula. Now again you can choose anyone as x1 y1, any one of those points as x1 y1, any one of those as x2 y2. Let's say इसको x1 y1 कह दिया, x2 y2 कह दिया. Let's just input values there. So that's 4 plus p divided by 2. And the other one is 5 plus q divided by 2. That's your midpoint. Okay, so midpoint formula लगा उसके अंदर values input कर दी, and there's your midpoint. Okay, then it says given that the midpoint of CD is 7, 1. अच्छा, अब उसने बता दिया कि अच्छा ये midpoint असल में ये है 7 and 1. Given this, find the coordinates of the point D. D point क्या था? This was the point D. जो P और Q उसने दिया हुआ था, ये D point था. इसके coordinates आपको find करने हैं, यानी P और Q की values figure out करनी है. P और Q क्या है? अब midpoint अगर 7, 1 है, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, this should actually be 7 and 1. ये असल में 7 और 1 होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे लिखा है 4 plus P over 2, this should be equal to 7 and 5 plus q over 2. This thing should be equal to 1. ठीक है, यहां से हमारे पास p और q की वैल्यूज आ जाएंगी. 2 को जाके मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड के ऊपर. It becomes 4 plus p equals 7 into 2, that is 14. और p हमारे पास यहां से आ जाएगा 14 minus 4, that is 10. और दूसरे इक्वेशन से अगेन 2 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ. It becomes 5 plus q equal to 2. और फिर 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ. We get q equal to -3. p और q के हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. So therefore the coordinates of D are, D के जो coordinates हमारे पास आएंगे फिर they are 10 and -3. These are the coordinates of D. Okay, is this clear? So that was the whole question. So that earns you 6 marks in total. Okay, so should we move on? Is this clear to everyone? Any issues with this? Any problems with this? Okay, good. Let's move on. Let's do another one. Okay, let's think about this now. So there are points A, B, and C that have these coordinates that are given. सबसे पहले तो वो gradient find करने कहते हैं. So I'll be quick about this. So gradient find करने gradient formula लगा देंगे. So that's just y2 minus y1. Again we discuss किया y2 minus y1 over x2 minus x1. We input values A और B ये हैं. पहला A है ये, दूसरा B है. तो किसी को भी आप y2 x2 कर लो, किसी को y1 x1 कर लो. So I'm getting 4 minus 8 divided by 12
minus 9, मेरे पास आ जाएगा -4 in the numerator and 3 in the denominator. So that's -4 over 3. ठीक है, gradient हमारे पास ये आ गया -4 over 3. We've gone through the process before as well. ये gradient हमारे पास आ गया इसका, ठीक है. 4 minus 8 minus 4 आ गया, जो denominator में 12 minus 9, that is 3, because we said this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Okay. Then it says equation of the line through C. So अब ये line है एक जो C से पास कर रही है, and that is parallel to AB. AB के parallel है. अब remember parallel line का क्या मतलब होता है? Parallel line का मतलब होता है they have the same gradient. Direction same है ना उनकी? Direction same होने का मतलब क्या है? उनकी slope या gradient that is the same. तो जो AB का gradient है वही इस लाइन का gradient होगा. Exactly Abdullah, that's very good. So just जो AB का gradient होगा वही इस लाइन का gradient होगा. तो हमें क्या करना है? हमारे पास एक point है C. C के coordinates are 4 and -2. इस ये gradient होना चाहिए एक लाइन का, और उसका जो ये सॉरी पॉइंट होना चाहिए जिससे वो पास करे लाइन, और ग्रेडियंट हमारे पास है -4 over 3. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है सो ग्रेडियंट -4 over 3 और इस पॉइंट से पास करता हो. जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस अगेन. y equals mx plus c. ग्रेडियंट आपको पता है क्या है? ग्रेडियंट इज -4 over 3. ठीक है, उसमें वो पॉइंट इनपुट करते हैं. अब जो पॉइंट था हमारे पास दैट वाज कहाँ था? 4 - 2. वो इसके अंदर इनपुट कर दें, वो पॉइंट इसके अंदर इनपुट कर देते हैं, तो वी गेट -2 equals -4 over 3 multiplied by 4 plus c. यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाए. ठीक है, c की वैल्यू आप देखना आपके पास क्या आती है. So I'm getting -2 plus 16 over 3. What do you get from this? Is this 10 over 3? Right? C की value 10 over 3 आती है. If you have 10 over 3 there, that means the line's equation is y equals mx plus c था ना, gradient तो -4 over 3 था. That's -4 over 3 multiplied by x plus c, and c is 10 over 3. This is the equation that we were looking for. Y equals -4 over 3x plus 10 over 3. Is this clear? Any issues with this? Any issues with this? Okay, good. So I'm assuming it's all right. So -4 over 3x. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया? आप basically LCM लेके मैंने उसको 10 over 3 लिखा है. I would recommend not doing it manually. Just use your calculator for this. -2 plus 16 over 3. Your calculator will give you the result 10 over 3. Decimals में नहीं लिखना. अच्छा, इसको decimal में नहीं लिखना बिल्कुल भी. 10 over 3 है ना? अगर आप कैलकुलेटर से इवैल्यूएट करोगे, it will turn out to be 3.3333 and so on. जब भी आपके पास इस तरह से नॉन एग्जैक्ट डेसिमल आता है ना, वो आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना. लीव इट एज अ फ्रैक्शन. इसको एज अ फ्रैक्शन रहने दोगे, इसको आप डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करोगे. So please keep that in mind. डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट करना, अब कैलकुलेटर आपको फ्रैक्शन में भी रिजल्ट देगा. यूज दैट फ्रैक्शनल रिजल्ट. Okay? Any problems with this? Anyone? Is this clear? Should we move on? Should we move on? Okay. Let's move on. Abdullah, can you hear me now? अब आवाज आ रही है आपको? Abdullah and Hassan, can you guys hear me? Abdullah and Hassan, can you guys hear me? Okay, so Hassan can hear me. Abdullah, you might want to refresh. That might help. Okay. Let's look at the next part here. -4 over 3x plus 10 over 3. हमारे पास ये result आ गया. Now let's go back there. And हमारे पास इक्वेशन आ गई थी यहाँ पे -4 over 3x
plus 10 over 3. Okay, now it says calculate the length of the line segment AB and BC. AB or BC की length figure out करनी है. And remember the distance formula? What was the distance formula? It was x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. This was the distance formula, right? This is how we calculate distance between 2 points. अब यहाँ पे क्या करेंगे? AB का distance, A और B के coordinates क्या हैं? 9, 8 and 12, 4. These are the coordinates. ठीक है? हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं इनको अलग से. Let's be sure. 12 and 4. इसके बाद में distance formula लगा देना है. ठीक है? That gives you 12 minus 8 का whole square plus, sorry, 12 minus 9 का whole square. Or be careful there. Plus 4 minus 8 का whole square. ठीक है? Okay, I think I got disconnected there. I hope you can hear me again. So let's apply the formula here. 12 minus 9 ka whole square plus 4 minus 8 ka whole square. And let's see what we get from this. We get 3 square, that is 9, plus 4 ka square, that is 16. Iska square root lenge. ये हमारे पास इसका evaluate कर लें आप. क्या आता है square root of 25, which turns out to be equal to 5. AB की length ये आ जाती है. Similarly, आप देख लें B और C की length. B और C के coordinates क्या हैं? B के coordinates are 12 and 4. ठीक है? और C के coordinates are 4 and minus 2. इसमें भी वही formula apply कर दें. 4 minus 12 का whole square. ठीक है? Plus minus 2 minus 4 का whole square. ठीक है? या देख लें क्या रिजल्ट आता है. You get 8 का square, that is 64, plus 6 का square, that is 36. That का square root लेंगे, you will get 10 as the result. ठीक है? Abdullah, beta, I think you might want to move closer to your internet device. Because I think it's fine for Hassan. अगर Hassan के लिए clear है, तो आपके end पे कोई issue लग रहा है मुझे. थोड़ा सा internet की अपने Wi-Fi device के पास move करें, and that might help. Okay, so we got the distances AB and BC. AB और BC के distances हमारे पास यहाँ पर आ गए. ठीक है? Okay, all right. Achha, so we found the distances of AB and BC there. अब हम देखते हैं हमारे पास 5 और 10 आ गए. ठीक है? Now let's look at, ये हमारे पे यहाँ पे भी मसला कर रहे थोड़ा सा. 5 और 10 आया था. You write that again there. So this was AB, that was 12 minus 9 का whole square, 9 whole square plus this. Okay,
All right, so we found the distances AB and BC. Okay, now show that AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC. ये show करना है. How do we do this? दो lines perpendicular एक दूसरे के, हम ये कैसे show करें? Is there a way to do this? AB and BC, they are perpendicular. How do we do this? -1 gradient. Okay. -1 gradient में क्या मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट -1 आएगा, राइट? दैट्स व्हाट यू वांट टू डू. दोनों को मल्टीप्लाई करें ग्रेडियंट्स को और उनका जो रिजल्ट आए वो -1 होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, हमारे पास AB का ग्रेडियंट तो ऑलरेडी है, राइट? AB ग्रेडियंट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, दैट वाज -4/3. Let's find, so for part C here, let's find the gradient of BC as well. ठीक है, gradient of BC. BC gradient कैसे निकालेंगे? Again, the same formula, y2 - 5/1 over x2 - x1. वो formula अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, BC के ऊपर. What do we get? We get -2 - 4 divided by 4 - 12. ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? -6 in the numerator divided by -8 in the denominator. And when we simplify this, we get 3/4. We simplify this, we get 3/4. ठीक है, अब एक हमारे पास BC का ग्रेडियंट है. Let's call this, इसको हम कह देते हैं M2. पहले वाले को हम कह देते हैं M1. एक ग्रेडियंट को हमने कह दिया M1, एक को कह दिया M2. So once we multiply both of them, M1 into M2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. What do we get? We get -4/3 multiplied by 3/4. Since this turns out to be -1, this means AB and BC, ये perpendicular का साइन होता है, उल्टा T लगता है मैंने यहाँ पे. AB is perpendicular to BC, क्योंकि दोनों के ग्रेडियंट्स का जो प्रोडक्ट है that is -1. ठीक है, एक इसको लिखने का ये तरीका होता है. Another possibility could be कि आप कहते कि एक ग्रेडियंट दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, right? So so this is one possibility जो मैंने यहाँ पे किया है, आपको दिखाया है. Another possibility could be gradient. आप यहाँ पे लिख देते gradient, जब आपने gradient निकाल लिया, gradient of AB is negative reciprocal. Remember हमने डिस्कस किया हुआ पहले, अच्छा आप शायद वो फ्री क्लास में डिस्कस किया था, मंडे वाली क्लास में, क्या ये नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है. साइन चेंज कर दो आप एक का, फॉर एग्जांपल 3/4 है ना, इसका आप साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस हो गया, और इसका रेसिप्रोकल कर दो. सो 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, दैट बिकम्स -3/4. अच्छा, आई एम सॉरी, आई थिंक आज ना प्लेटफॉर्म पे थोड़े ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं. कैन यू हियर मी अगेन नाउ? होपफुली जूम पे फिर इश्यूज नहीं आएंगे. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अब्दुल्ला एंड हसन, Abdullah and Hassan, can you guys hear me? Okay, good. Thank you for confirming. अच्छा, so एक इसको तो लिखने का तरीका ये हो सकता था,
अच्छा, एक इसको लिखने का तरीका ये हो सकता था कि हम कहते कि gradient of AB is negative reciprocal. Gradient of AB is negative reciprocal of the gradient of BC. Is negative reciprocal of the gradient of the gradient of BC. Okay. ये इसको लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है? Is this clear? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? AB और BC एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है. Okay, sorry. I think I दोबारा से मैं disconnect हो गया था. I've just rejoined again. Can you hear me now? Can you hear me now? Okay, thank you. So अच्छा, बाकी हमारी इसलिए मैंने बाकी 3 क्लासेस Zoom पे की हुई हैं कि हमारे वहाँ पे ना इश्यूज ना आए. एक क्लास यहाँ पे करना जरूरी होता है. तो एक ये वाली क्लास में यहाँ पे क्या करेंगे, पास्ट पेपर से हैं, हम Zoom पे क्या करेंगे. अच्छा, okay. Now, gradient of AB is negative reciprocal of the gradient of BC. आप इस तरह भी लिख सकते हो उसको, ठीक है? This is another way of writing this. This is another way of writing that. अच्छा, इसके बाद तो क्या कहते हैं, हमने perpendicular तो शो कर दिया. हमने क्या शो किया? AB is perpendicular to BC. This is what we have shown here. अब उसके बाद वो कहते हैं calculate the area of the triangle ABC. ABC का एरिया फिगर आउट करना है. अब ये ट्रायंगल जैसे भी हो, हमने इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि AB और BC परपेंडिकुलर हैं, तो think about this. What will this triangle look like? अगर AB इस तरह होता, if this was AB, अब क्योंकि BC परपेंडिकुलर है, if this was A here and this was B here, क्योंकि BC परपेंडिकुलर है, that should have been something like this. तो यहाँ पे बिल्कुल B के ऊपर इस तरह परपेंडिकुलर एक लाइन बनती जहां पे हमारे पास C आता. So this triangle ABC has to be a right angle triangle. यहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहा होगा. अब 90 डिग्रीज बन रहा है, आपके पास AB और BC की लेंथ तो ऑलरेडी हैं. हमने फिगर आउट कर लिया था पहले कि AB is equal to 5 and BC is equal to 10. ये हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा. So therefore, the area of this triangle is simply going to be half into base into height. Base is 5 in this case. Remember, जो height होती है इस फॉर्मूला के अंदर, जो एरिया का फॉर्मूला होता है, half into base into height. Height is always perpendicular height. ठीक है? तो हर जगह नहीं लगा सकते हम ये. हमारे पास अगर perpendicular height पता हो हमें, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज हम हर जगह पर नहीं कर सकते. हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, half into AB sin C. Sometimes you also have to use that other formula. But in this case, it's pretty straightforward. You've got the base, you've got perpendicular height, that is 10. You just evaluate this, and that will turn out to be 25. That is the area. Half into 5 into 10, because हमने इनकी lengths पहले figure out कर ली हुई थी, 5 and 10. All right. Okay, so I hope that's clear. Yes. Was the area part clear here?
Now let's do one more question before we end. Just so I see a sad face there. So can you tell me specifically what you don't understand there? So I see one of you said you don't understand. So can you ask specifically kahan pe issue tha? Part D. Okay. Area of triangle. Okay. अच्छा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आपको एरिया फिगर आउट करना है, ठीक है। अब उसने देखिए आपसे कुछ चीजें ऑलरेडी निकलवा ली हैं पहले पार्ट्स में। उसने आपको पार्ट B1 में AB की लेंथ निकलवाई थी उसने आपसे, ठीक है, वो हमारे पास 5 आ गई थी। फिर पार्ट B2 के अंदर दे आस्क्ड फॉर द लेंथ BC, ओके, BC लेंथ हमारे पास 10 आ गई। तो AB और BC दोनों की लेंथ तो हमारे पास आ गई, ओके। उसके बाद उसने सी पार्ट में क्या कहा, उसने कहा शो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC। AB लाइन जो है अगर वो इस तरह से है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, BC जो होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो पॉइंट B है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यही हमने सी पार्ट में शो किया है। द ट्रायंगल इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अगर AB इस तरह से नीचे है, इसकी लेंथ 5 है, और BC जो है इस तरह से उसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 10। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज सिंपली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सो हाफ इनटू बेस, बेस क्या है, हमने यहाँ पे 5 ले ली बेस, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, द हाइट वाज 10, half into 5 into 10, that turns out to be 25. 25 is the result here. So does that make sense? इसमें exactly कहाँ पर इशू आ रहा है आपको अभी, or is this clear now? अब ये clear है? Okay, good. Now let's do one more question before we end. Let's do one more question before we end. So that is right here. Okay. अच्छा, अब अक्सर आपको ना इस तरह के ग्राफ्स भी बने हुए आते हैं, कोई या फिर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस बने होते हैं, x axis and y axis, और उसको यूज करके you have to do something. So let's consider this scenario. There are 4 points P, Q, R, and S, and this P, Q, R, S becomes a parallelogram. The point P is -4 and 0, the point Q is 1 and 0, and the point R is 9 and 4. ये 3 points आपको पता है वहां पे, P is here, Q is here, R is here. 3 points आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं क्योंकि P, Q, R, S एक पैरेललोग्राम है, find the coordinates of S. S कहां पर होगा ये आपको फिगर आउट करना है। S कहां पर होगा? Remember it's a parallelogram. अब remember parallelogram की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है? पैरेललोग्राम इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, एंड एट द सेम टाइम दे आर पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, दे आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इसका क्या मतलब है? पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम, हम 3 साइड्स हम ज्वाइन कर सकते हैं ना, तो वी हैव पी एंड क्यू, सो पी क्यू इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, पी क्यू, दैट्स पी क्यू, उसके बाद क्यू से आर, दैट्स क्यू आर। ये 2 साइड्स तो हमारे पास हैं, ठीक है। अब एस कहां पर आए तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाए? हाउ डू वी फिगर दैट आउट? नाउ रिमेंबर हमने यहाँ पे क्या लिखा? Opposite sides have to be equal and parallel. ये जो PQ है यहाँ पे जो नीचे आ रहा है यहाँ पे, इसकी opposite side कहाँ पर होगी? RS. If this is horizontal like this, PQ जो आपको नजर आ रहा है ये एक horizontal line है, इसका मतलब ये है जो R से S पे लाइन आ रही होगी वो भी इस तरह से कोई horizontal line होगी, ठीक है, लेकिन वो कितनी लंबी होगी? How do you figure the length? हमारे पास PQ की लेंथ क्या है यहाँ पे नजर आ रही है आपको, अगर आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5,
there are 5 units there, so PQ length is equal to 5 units. PQ is 5 units, तो ऊपर RS की लेंथ जो होगी you want and that will also be 5 units. ठीक है, तो अब एक पैरेलल लाइन वहां पे ड्रॉ कर दो, पैरेलल लाइन वहां पे ड्रॉ कर दो, that is here, that is of 5 units. यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा at क्या मतलब वहां पे कहां से स्टार्ट कर रहे हो आप, R से स्टार्ट कर रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 and 4. 5 यूनिट्स लेफ्ट पे आओगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए 9 में से 5 माइनस कर दो, this has to be 5 units, इसमें से 5 माइनस किया, आपके पास आ गया 4 and 4. These are the coordinates of the point S, which are 4 and 4. Okay, Hassan, you want to pray with Jamaat? You want to go and pray in Jamaat? Okay, so if you want to go and pray in Jamaat, you can go. So I'll just complete this and then I will end. So you can have a look at the recording later on. ठीक है, आप इसको बाद में recording एक दफा देख लीजिएगा. ये हम question complete करेंगे and then we will end this class. ठीक है? On Thursday we will be having a class on Zoom. Zoom का मैं लिंक पोस्ट कर दूं. ठीक है, I'll see you again on Thursday इंशाल्लाह. मैं Zoom का लिंक वहां पे पोस्ट कर दूं. ठीक है, I'll see you again on Thursday इंशाल्लाह. I'll just complete this question. आप recording available होगी, आप बाद में देख सकते हो उसको. Okay, अल्लाह हाफ़िज़. अच्छा, तो S के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे? They are 4 and 4. Okay, they are 4 and 4. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है? Find the coordinates of the midpoint of PR. PR का मिड पॉइंट फिगर आउट करना है आपको. ठीक है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, R के भी हैं. आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे और आपके पास क्या होगा, आपके पास P उसका मिड पॉइंट आ जाएगा. सो P इज this is P, this is R. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं इसके ऊपर. We have -4 + 9 divided by 2 and we have 0 + 4 divided by 2 and that gives us 5/2 and 2. ओके, ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ PR. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन RS. RS की इक्वेशन फिगर आउट करनी है आपको. नाउ अगेन, इक्वेशन फाइंड करने के लिए यू नीड टू थिंग्स, ग्रेडियंट एंड, एक ग्रेडियंट चाहिए होता है आपको और दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? दूसरी चीज आपको चाहिए होती है एक पॉइंट तो उस लाइन के ऊपर लाई करता है. ग्रेडियंट कैसे फिगर आउट करें इस लाइन का, RS का? RS ग्रेडियंट क्या है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? दैट इज 0. ग्रेडियंट तो आपके पास 0 है यहाँ पे. तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन किस तरह होती है? मैं रिमेंबर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस. एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है इस तरह से. हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y = समथिंग. वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनकी इक्वेशन होती है x = समथिंग. और फिर स्लांटेड लाइंस होती हैं जो इस तरह हो सकती हैं, इस तरह हो सकती हैं. इनकी इक्वेशन होती है y = mx + c. तो ये तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आप डायरेक्टली लिख सकते हो y = that value. हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जो होती है दैट इज सिंपली y = whatever that value is. Y coordinate क्या है उसका 4 है. You say the equation here is going to be y = 4. इसको भी आप y = mx + c से भी करना चाहो आप कर सकते हो. ग्रेडियंट 0 है तो वो 0 आ जाएगा, सिर्फ y इंटरसेप्ट रह जाएगा. y इंटरसेप्ट जो है दैट इज 4. तो y = 4 आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई RS की. तो उसके बाद वो क्या कहते हैं? QR की इक्वेशन. QR की इक्वेशन के लिए अगेन इट्स अ स्लांटेड इक्वेशन. स्लांटेड इक्वेशन हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y = mx + c. ग्रेडियंट क्या होएगा? y2 - y1 / x2 - x1. q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? q के कोऑर्डिनेट्स आर 1 and 0. ग्रेडियंट क्या आएगा?
4 minus 0 divided by 9 minus 1, and that gives us 4 over 8 or 1 over 2. ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 1 over 2. ठीक है, अब इसके अंदर इनपुट कर दें y equals half into x plus c. q या r में से कोई भी पॉइंट इसके अंदर इनपुट कर दें. जैसे मैं q इनपुट करता हूँ. Let's put 1 and 0 in this. 1 and 0 इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर. ठीक है, अब उससे क्या होएगा? 0 equals half into x, half into 0 equals half into 1 plus c. c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? c will be equal to minus 1 over 2. ठीक है, c की वैल्यू minus 1 over 2 आ गई. तो इक्वेशन क्या बनी लाइन की? Equation of the line therefore is y equal to half into x minus 1 over 2. That is the equation of the line that you were looking for. This is the equation of QR. QR की equation हमारे पास आ गई y equals half x minus 1 over 2. Is this clear? Any problems with this? Any problems with this? No? Okay, good. Now let's just do the last part here. It says calculate the area of the parallelogram PQRS. ये जो parallelogram हमारे पास था वहाँ पे उसका area figure out करना है. Okay, इसका area figure out करना है. Now does it even remember the area of a parallelogram का formula? वो क्या होता था? Area of parallelogram. उसका formula क्या होता है? No? So one possibility is, if you don't remember the formula, one possibility is अब उसको break down कर लो दो parts के अंदर. Make two triangles out of this. इसको यहाँ पे ना एक line बना दो. ये दो triangles बन गई. इन दोनों triangles के area figure out कर लो. दोनों equal triangles हैं ना, दो parts में divide कर दिया. इन triangles के area figure out कर लो. एक triangle को find किया, उसको 2 से multiply कर दिया. So basically triangles का क्या area आएगा? Area of a triangle क्या होता है? Half into base into height. ये आपके पास ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है. उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि वो दोनों इक्वल ट्रायंगल्स हैं तो हमारे पास बेसिकली आ जाता है बेस इनटू हाइट. दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला. इट्स जस्ट बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. दैट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. बेस इनटू हाइट. ओके, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. बट यू हैव टू बी केयरफुल. हाइट कौन सी होती है? परपेंडिकुलर हाइट. ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या बेस लेते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बेस लेता हूं, आई एम कंसीडरिंग PQ एज द बेस. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं PQ को बेस ले रहा हूँ. ठीक है, PQ को बेस कंसीडर कर लिया. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. बेस क्या है मेरी? PQ व्हिच इज 5. अगर मैं PQ को बेस लेता हूं तो मेरी हाइट क्या होगी? परपेंडिकुलर हाइट अंटिल द अदर साइड. दूसरी साइड तक मेरी परपेंडिकुलर हाइट क्या बनती है? दैट इज व्हाट आई हैव टू फिगर आउट नेक्स्ट. तो बेसिकली ये मेरी बेस थी. हाइट कितनी है? ये परपेंडिकुलर. देखिए ऊपर वाली साइड कहां तक है? उसका y कोऑर्डिनेट इज 4. ये वर्टिकल हाइट देखनी है मुझे, परपेंडिकुलर हाइट. ये हाइट कितनी है? दिस हाइट इज 4 units. So I say this is 5 multiplied by 4 and that gives me 20. That is the area of the parallelogram. Area of parallelogram का फॉर्मूला क्या होता है? Base multiplied by height. Base आप जो भी ले रहे हो उससे फिर perpendicular height towards the other side. यहाँ पे हमारे पास 4 आ रही है. So 5 into 4, that is the area of the parallelogram. That's 20 in our case. Is this clear? Any issues with this? Any problems with this? Okay, good. So we stop here. We stop here then.